आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। Hi ladies, here's an Indian traditional makeup tutorial for you. Almost. Now this makeup look is not going to be completely over the top Indian jhattak types. Let's get started with some skin prep. Using the L'Oreal Paris Revitalift Micro Crystal all over my face. I honestly got this in a PR, but I love this so much. I use it every day on my skin, and I have even made an in-depth review video about it a few months back. You can check it out. Using a gel-based moisturizer as the next step because ये normal से थोड़ा heavy होगा makeup, so we need proper moisturization. Moving straight forward to the foundation, I'm going to use Wet n Wild Photo Focus foundation. So this foundation comes with a spatula, so it is very easy to apply. It gives like a medium high coverage, which is why I reach out for it every time I go heavy with my makeup. I don't really like a full coverage foundation. It actually looks a little artificial and like plasticky to me, so I don't go for a full on coverage, but I do like a medium to high coverage when it comes to a proper heavy makeup. Now the trick to a flawless base is how you blend your foundation. No matter the tool, whether you're using a beauty blender or a makeup brush, I highly recommend you to not drag the foundation on your skin. So I actually got a nose piercing done a few days back, and because the nose piercing is very fresh, it's in the healing phase, I needed to keep it away from makeup. You always tap and bounce the brush so that there are no strokes or lines visible on your face. Right after I'm done blending my foundation, I will match the color tone of my hand and face, because दोनों के कलर में अगर फर्क हो जाए, अगर तो it looks very cheap. Moving on to concealer, I'm just gonna apply some dots on my acne scar areas and also on my nose just for the purpose of highlighting. I don't usually conceal my nose as such, but because I want some highlighting effect, so I'm gonna do that. And again, the technique is just to bounce the brush and not drag, especially not the concealer. You cannot afford to drag your concealer. Moving on to the next step is baking my face. Now I don't usually bake my face, like almost never. But just for the sake of today's makeup, I know हमें थोड़ा heavy makeup करना है, so that is why I'm going to bake my face. इससे थोड़ा highlighting effect आएगा, और जितना भी एरिया मैं फेस पे बेक करूंगी वो वैसे के वैसा ही रहेगा. The makeup will not budge from its place. So what I'm doing is I'm taking some loose powder. You can even take basic talcum powder and just apply it under your eyes, on the bridge of your nose, upper lip and your chin. I'm going to let it sit for almost 5 to 10 minutes. That should be it. इससे ज़्यादा बेक करने से थोड़ा ड्राइनेस भी आ जाता है और कम बेक करने से इफेक्ट प्रॉपर नहीं आता. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कॉन्टोरिंग. मैंने अपना पाउडर एग्जैक्टली अपनी कॉन्टोर लाइन के नीचे ही प्लेस किया है, जिससे कि उसके डेफिनेशन ठीक आए. You have to draw your contour line starting right from your sideburns till the tip of your eyebrow. इससे क्या होगा, exactly उसी जगह पर definition आएगी, face में structure exactly उसी जगह पे आएगा जहाँ पे आपको अपना face थोड़ा chiseled चाहिए. The trick to blend your contour is to blend it into your hairline. You don't want to blend it upwards or downwards. Contouring a little bit on my forehead too, although मेरे forehead में ज़्यादा space है नहीं and it's just 2 fingers broad. मेरा forehead already बहुत छोटा है, तो contouring की ज़रूरत उनको ज़्यादा पड़ती है जिनका forehead बहुत broad होता है, तो उनको थोड़ा ठीक से shape देने के लिए. Otherwise मैं contour नहीं करती, but just for the sake of this video पूरा symmetrical लगे and मेरे face पे ऐसे ज़्यादा difference ना हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा forehead पे भी किया है. Now it's finally time to dust off the baking.
अभी जितनी देर हमें कंटूर करने में लगी इतनी देर इज इनफ फॉर द पाउडर टू सिट ऑन द फेस फॉर बेकिंग. सो अभी आई एम जस्ट गोना डस्ट इट ऑफ एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. हमने चीक बोन और लोअर जॉ पे पाउडर से हाईलाइट किया है और सेंटर में कंटूर किया है, तो उससे हमारे फेस की डेफिनेशन एकदम उभर के और शार्प आएगी. जब भी हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर वी आर डन विद द हाइलाइटर, यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर नेचुरल फेस और कंटूर करने के बाद. Moving on to the eyebrows, I'm just gonna fill it in with an eyebrow pencil. There's nothing too fancy about it. इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत हल्के हाथ से फेदर लाइक स्ट्रोक से अपनी हेयर की ग्रोथ को मिमिक करना है. बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेना है बिकॉज उससे काफ़ी बॉक्सी और डार्क सी आईब्रोज हो जाएंगी. आर्टिफिशियल, यू डोंट वांट दैट. Moving on to eyeshadow, I'm just gonna place one transition shade which is very close to my natural eyelid color. थोड़ा उसमें orangish tint है इस color में, so I'm just gonna take it and place it all over my eyelid. ये transition shade का काम करेगा. Doing the same thing on my other eye and I'll just move on to the next color. For the next step, I'm gonna take a darker color than the previous one and place it on the corners of my eyelids. इससे जब मैं अपनी आईज ओपन करूंगी तो इट विल लुक लाइक मेरे आईज की शेप प्रॉपर डिफाइंड है और थोड़ी बड़ी है नेचुरल शेप से, विच इज ऑलवेज अ प्लस प्लस. टेकिंग अ फ्लैट ब्रश, आई एम गोना टेक द सेम कलर्स एंड अप्लाई इट ऑन माई लोअर लैश लाइन. इससे इफेक्ट जो है कंप्लीट आता है और ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ आईज के ऊपर ऊपर तक मेकअप किया हुआ है. इससे ओवरऑल आईज काफी सुंदर और पुट टुगेदर लगती हैं. Moving on to the inner parts of my eyes, I'm going to take a glitter shade and glitter shades की ट्रिक की वो ब्रश से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते. फिंगर्स की हीट से सही मेल्ट होके अच्छा इफेक्ट देते हैं, which is why I'm using my ring finger ताकि मेरी आईज पे ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े. And I'm just gonna place it on the insides of my eyes. अभी जितना भी मैट और शिमर शेड्स के बीच में जो स्टार्क डिफरेंस आएगा, you have to blend it out using a brush and a very light hand. Moving on to my most favorite part of eye makeup, the inner corner highlight. The one I'm using is by Maybelline Molten Chrome highlighter. Everybody knows about it. अभी कितना भी आई शेडो लगा लो, it will never look complete if you don't have proper eyelashes. Now I know सबके पास falsies नहीं होते हैं. I'm using the one by Maybelline Hyper Curl Mascara. This one is pretty good. It's decent enough. So मैं अपनी eyelashes को अच्छे से लंबा लंबा कोट करूंगी. Moving on to the blush, I am not a very big fan of wearing a blush honestly, but because पूरा face ऐसे flat नहीं लगे, पूरा का पूरा pale नहीं लगे, so I do wear some sort of a blush जिससे मेरे face पे बस थोड़ा सा flush आए कलर का. ऐसे नहीं कि वो proper लगे कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ लगा रखा है अपने cheeks पे. Now moving on to my most favorite part, the lipstick. अभी मैंने eyes में अच्छा खासा मेकअप कर लिया. I don't want to go overboard with it, and also because मेरे outfit में कोई reds और pinks नहीं है, so I'm gonna go with an almost nude shade. The lipstick I'm wearing for today's makeup is by L'Oreal Paris. I have made an in-depth proper video along with lip swatches of these lipsticks. Now because this is a festive makeup look, how can you forget a highlighter? I'm gonna use the same one, the one I used on my eyes by Maybelline Molten Chrome highlighter. I absolutely love this one. I've been using it for almost a year now, or a little more than a year, and I still love it so much. I wear it all the time for all my festive makeup looks, all my night looks, and I really love this highlighter. Now I'm just gonna apply it to the highest points of my face, the usual cheekbones, eyebrow bone, bridge of the nose, upper lip पे थोड़ा सा tint, all the places that I want to shine. And with this, I complete this makeup look. I really love how it turned out. ये बिल्कुल भी over the top नहीं लग रहा and at the same time festive भी लग रहा है. And जो मैंने इसमें outfit पहना है, इसकी पूरी details will be coming up in another video. I got it from Amazon at a very affordable price. You don't want to miss the details. That will be coming up in the next video coming up next week.
If you like this video, give it a thumbs up, and if you did not, give it a thumbs down. Please be a sweetheart and subscribe to my channel. Bye.